Okay. So we were talking about the experimental chemistry and separation techniques in last 2 or 3 classes, and we are going to proceed that over here again today. And we know that we just completed what these things, these instruments, right? The collection methods of gases, and then drawing methods of gases, and then we talk about chromatography as well. We talk about distillation as well. Now we have few things remain that we need to discuss in today's class, and in these few things, the first one is filtration. The first one is bacho, filtration. So today we are moving towards filtration to talk about. Now, what is filtration and why we do this? Filtration is actually, it is one of the physical method to separate two substances, or you can say that two different substances or something like the chemical, which chemicals by filtration method. लेकिन हमें ये पता होना जरूरी है कि हम chemicals को अगर separate करेंगे तो कौन से chemicals separate हो सकते हैं, कौन से chemicals separate हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं by filtration. If you remember this, then it will be helpful for you. Otherwise, there is no use of filtration for you. अगर filtration के बारे में आपको पता ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है filtration का लफ्ज यूज करने का. Filtration is a process which can use for a specific reason. And what is the specific reason for use filtration, bacho? It can only be used to separate insoluble substances. Remember this, insoluble substances can be separated by filtration. Insoluble substances can be separated by filtration. You need to remember this. If you want to separate a soluble one and an insoluble one, so you can use filtration. Otherwise, there is no use of filtration for you, right? So you need to keep remember this. Now, what is this? For example, if you are having a mixture over here, you can see this. In this mixture, you have some substances or something over there which is insoluble. So you just convert all this mixture over here through the filter funnel and filter paper. This is what, bacho? This is filter funnel. This is what? This is filter funnel, and we have this dotted diagram is filter paper, right? So you pass everything through this apparatus. So you will see that the substance which is insoluble is a part of the filter paper over there, right? And something which is soluble is passed through the filter paper. So the substance which is on the filter paper remain, it is known as residue. तो जो भी आपके पास insoluble होगा बच्चों, वो जाहिर सी बात है वो dissolve ही नहीं हुआ हुआ, तो वो फिल्टर पेपर के थ्रू नहीं पास आउट हो पाएगा. जब वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास आउट नहीं हो पाएगा तो वो सारा का सारा फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और वो सेपरेट हो जाएगा. तो इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू, ठीक है ना. और ये जो पास आउट हो जाएगा इसको आप बच्चों क्या बोलते हो? फिल्ट्रेट. क्या बोलते हो आप? फिल्ट्रेट. और ये पास क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास NaCl था, आपने क्या लिया? आपके पास वाटर था, उस वाटर के अंदर आपने NaCl ऐड किया और आपने उसके अंदर बच्चों सैंड ऐड कर दी. So we know that NaCl is soluble in water. तो NaCl पानी में डिसॉल्व हो गया तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया और सैंड विल रिमेन अनडिसॉल्व इन दैट सॉल्यूशन. तो हमने फॉर एग्जांपल सैंड को सेपरेट कर लिया है और ये आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन था तो वो फिल्ट्रेट के तौर पर आगे बढ़ गया. इज दैट राइट बच्चों और नॉट? राइट? यस सर. अच्छा बच्चों देखें, पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, आप लोग मतलब 1 मार्क के लिए बहुत ही कोई उल्टी सी बात लिख देते हो जो कि आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं. अभी कुछ दिनों पहले मैं बच्चों के पेपर चेक कर रहा था तो मुझे उसमें देखने को मिले कुछ अजीब से आंसर्स. अच्छा तो उसने पूछा हुआ था आपके पास इफ यू वांट टू सेपरेट सैंड फ्रॉम द मिक्सचर सो व्हाट वी नीड टू डू ना. तो डेफिनेटली सी बात है हम लोगों को वहां पर फिल्ट्रेशन यूज करनी है. तो वो पूछ रहा था बताएं हमें क्या यूज करना है, तो सबने कह दिया फिल्टर पेपर यूज करना है. भाई फिल्टर पेपर चले ठीक है, फिल्टर पेपर इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉल्यूशन, दैट्स फाइन. लेकिन फिल्टर पेपर खाली तो हम हाथ में लेके नहीं खड़े हो सकते ना. if we want to filter something, if we want to remove something insoluble from the substance, so we need to set up a whole procedure, whole experiment, whole instrument, right? So this is the whole instrument. अब आपके पास ये फिल्टर फनेल और फिल्टर पेपर है, इस पूरे प्रोसेस को आप नाम देते हो फिल्ट्रेशन. अगर आपको फिल्ट्रेशन करनी है,
अगर आपने कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस सॉल्यूशन से रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने के डेफिनेटली बात है, आप सिर्फ फिल्टर पेपर तो यूज नहीं करोगे ना, आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट, पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। अब फिल्टर फनेल के बगैर फिल्टर पेपर किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास, अगर आपके पास फिल्टर फनेल है और आपके पास फिल्टर पेपर है और फिर आप उसको यूज करें, तो आपके पास डेफिनेटली एक बीकर होना चाहिए या कॉनिकल फ्लास्क होना चाहिए जो आप फिल्ट्रेट कलेक्ट करेंगे उसके लिए, ठीक है ना। उसके अलावा इस पूरे प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। तो बच्चों ने वहां लिखा हुआ था यूज फिल्टर पेपर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। So this is the wrong answer. We need to write over there that we need to use the filtration process, right? तो आपने याद रखना है बच्चों, जब भी आपसे पूछा जाए what should be used to remove the insoluble impurities, you need to understand filtration process. You need to write the name of process. We need to use the process, not only filter paper. सिर्फ फिल्टर पेपर से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही फिल्ट्रेशन होगी। Is that clear to every one of you? Yes, sir. So it is a very common question in the exam. You will find that which method, or ये भी पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं what can be used to separate the insoluble impurities. So bachcho, if you want to remove insoluble impurities from any substance, from any mixture, from any solution, so you need to keep remember what we need to do. We need to do filtration. You cannot write simple filter paper over here. You cannot write use filter paper. That is not right. You need to write use filtration process. Which method can be used, right? Is that right, Bacho? Yes, sir. Yes, sir. For example, this is for the insoluble substances. जो substance आपके पास insoluble थे, आपने उसको remove कर लिया, आपने पानी के अंदर मट्टी मिला दिया, आपने पानी के अंदर आयरन मिला दिया, आपने पानी के अंदर कोई भी ऐसी चीज मिला दी जो कि पानी में insoluble है। जैसे for example, if you add calcium carbonate in the water, for example, if you add aluminum oxide into the water, for example, if you add barium sulfate into the water, whatever substance which is insoluble in water, अगर आपने उसके अंदर मिला दिया है liquid solution के अंदर, या whatever the solution or whatever the solvent you have, उसमें अगर कोई भी एक चीज solid है, and if you want to remove that solid from the solution, you need to use what? You need to use filtration. Or even if you are having a sea water or the water from the lake, so definitely we are very educated peoples in the world. We just throw our waste in the water, in the river, in the canals. We are very educated, mashallah. हम जो खाते हैं उसको हम समंदर में फेंक देते हैं, ये हमारी एजुकेशन है, we know that. तो हम उसको फेंक देते हैं समंदर में, तो वो समंदर भी तो पिए ना थोड़ा सा जूस। भाई हमने जूस पी लिया तो जूस के अंदर जो थोड़ा सा जूस बाकी है उसको समंदर को पीना चाहिए, वो मछलियां पिएंगी, इसलिए हम उसको पानी में फेंक देते हैं। तो उस कचरे को भी अगर हमने सेपरेट करना है उस पानी से, उस जूस के डब्बों को या उस पानी की बॉटल्स को, या whatever we just throw the wastage in the sea or in the canal or in the lakes, तो उसको भी अगर हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए भी हम फिल्ट्रेशन ही यूज करते हैं। एक बड़े बड़े जो चीजें होती हैं वो बड़े बड़े पानी को साफ करने के लिए, या डैम्स के अंदर जो पानी जो है आपके पास जा रहा होता है, एरियाज के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वो जिस रास्ते से जा रहा होता है उसके अंदर वो एक जाली टाइप लगाते हैं, एक फिल्टर टाइप लगाते हैं, उस जाली से गुजरता है पानी और उसके अंदर जितना भी कचरा होता है वो सारा वहीं रुक जाता है। सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो होता है वो वहीं रुक जाता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है पानी के अंदर वो वहीं रुक जाता है और पानी आगे निकल जाता है। So this is one of the type or one of the use of filtration. You need to keep remember this: the substances that are insoluble in water can be separated by filtration method. Is that clear, every one of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then we have one more process, which is actually evaporation. Evaporation is actually one of the process which can be used to separate out the soluble impurities. ठीक है, अब ये उसके लिए है जो सब्सटेंस पानी के अंदर सॉल्युबल हो गया, जैसे NaCl है। अब पानी के अंदर अगर NaCl है तो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया, अब वो जो चीज डिसॉल्व हो गई है उसको सेपरेट करने के लिए वी कैन यूज evaporation, and one method also which is known as crystallization, right? We cannot use evaporation for every soluble substance. For example, अगर आप sugar की बात करें तो sugar is also a water soluble substance. So for example, if sugar is dissolved in water and if you want to separate the sugar from the water,
So you need to do crystallization because the crystals of sugar is very sensitive. If you heat them till dryness, so they are going to be decomposed. ठीक है ना, जल जाएंगे वो और वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे. So you need to keep remember this कि sugar जैसे crystals को आप जो है evaporation से separate नहीं कर सकते, तो उसके लिए crystallization करना पड़ेगी. And we don't know during the crystallization and evaporation कि यार हमारे पास salt हैं कौन से इसके अंदर, तो इस वजह से हम हमेशा crystallization करते हैं. Evaporation is actually the heating till dryness, मतलब जब तक वो सूख ना जाए आप उसको हीट करते रहो और बिल्कुल सारा का सारा पानी उड़ा दोगे, तब जाके आप उसको रोकोगे. तो that is something difficult for some of the crystals. वो बर्दाश्त नहीं करते इतनी हीटिंग, वो टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं. तो इसलिए हम normally salt formation में भी ये crystallization use करेंगे. You will learn this in salt formation as well. So right now, what is evaporation and crystallization? It is actually the separation of soluble substances from the water. It is actually separation. You can separate out separation of soluble substances. If the substance is soluble, it is the separation of soluble substances from the water or from the solution, right? तो solution के अंदर जो soluble substances हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, evaporation से separate out कर सकते हैं. For example, if you have sea water, ठीक है ना, आपके पास sea water and you want to separate out sea salt, or you want to separate out the water or whatever, you need to separate them. हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम सी वाटर लेंगे, उसको हीट करना शुरू करेंगे, उसको हीट करते रहेंगे. जब सारा पानी एवापोरेट हो जाएगा, तो the salt will be in the container. You will find the salt in the container. This is actually the method to separate the salt from the solution, right? Now you need to keep remember this बच्चों कि आप कर क्या रहे हो, आप salt identify कर रहे हो और salt receive कर रहे हो. जब आप हीट करोगे तो पानी तो सारा उड़ जाएगा, पानी सारा उड़ जाएगा, लिक्विड सारा उड़ जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, कंटेनर में आपके पास सॉल्ट रह जाएगा, कंटेनर में आपके पास सॉल्ट रह जाएगा. सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट और टू हैव द सॉल्ट. या आप सॉल्ट हासिल करने के लिए कर रहे हो, पानी हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हो. डेफिनेटली समंदर के अंदर इतना पानी है तो मैं समंदर का पानी को जमा करके क्या करूंगा, मैं पानी को उड़ने दे रहा हूँ, ठीक है ना. मैं उसमें से सॉल्ट कॉन्क्लूड करना चाह रहा हूँ, उसमें से एक सॉल्ट मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो सॉल्ट निकालने के लिए पानी को सारा एवोपरेट कर लिया और डिश के अंदर या कंटेनर के अंदर या वेसल के अंदर आई जस्ट हैव the salt remain right after the evaporation of complete water. Can any one of you tell me the boiling point of the water of sea? क्या होना चाहिए बच्चों boiling point? ऐसी प्रेडिक्ट कर दो. Any one of you? 80. कितना होना चाहिए? 80. No 80. Sir, around 350. ये बहुत ज्यादा हो गया. 105. 105. That's good. That's pretty good answer. हमें पता है बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी है. हमने चीज क्या पढ़ी है? If the substances are pure, so their melting and boiling points are fixed and sharp, right? So अगर आपके पास कोई भी substance pure होगा, कोई liquid अगर pure होगा, तो उसका boiling point 100 होना चाहिए, fixed, sharp. सारे के सारा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होना चाहिए अगर पानी प्योर हो तो, right? And secondly, we learned that if the liquids are impure, अगर liquids impure हो जाएं तो उनका boiling point बढ़ जाता है. अगर liquid impure हो जाएं तो उनका boiling बढ़ जाता है. हमने सिर्फ इतना पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा कितना बढ़ जाता है, बस हमने पढ़ा बढ़ जाता है. So any temperature above 100 degree centigrade would be accepted, right? But 350 बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा. उसका पानी तो ज्यादा है ना, वैसे भी पानी ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा नहीं है उसके अंदर, पानी ज्यादा है, तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा. तो इट मे बी 120, 105, 110, 118 somewhere ना. It is near 200, right? But it is above 200 also because when liquids are impure, their boiling points are a little bit larger or higher. Is that right, every one of you? Yes. बच्चों, right now we are not having liquid. हमें liquid नहीं चाहिए. We are just evaporating the water. और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए है salt. तो salt चाहिए इसलिए हम पानी उड़ा रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? evaporation कर रहे हैं. For example, अगर मुझे पानी चाहिए होता तो मैं कौन सा प्रोसेस करता? Simple distillation. Simple distillation. Perfect. Very good. If I want liquid, अगर मुझे liquid चाहिए तो मैं simple distillation करता. मैं liquid के vapors को evaporate करवाता. Evaporate कराने के बाद उनको condenser से पास कराता. Condenser से जैसे वो पास होते हैं, उनका temperature कम होता, वो vapors जो हैं condense होकर liquid बनते हैं. And I collect that in the conical flask. Is that right or not? Yes, sir.
सो अगर किसी सॉल्युबल सॉल्यूशन में से आप लिक्विड है मतलब हासिल करना चाह रहे हो, so you can do what simple distillation, और अगर आपको सॉल्ट चाहिए तो you can simply do what crystallization or evaporation. Is that right, every one of you? Yes, sir. Then over here, this is one of the separating funnel. You can use this. Sir, जी बेटे, sir, crystallization और evaporation में difference क्या है main? बेटा क्रिस्टलाइजेशन और एवोपरेशन में डिफरेंस ये है, जब आप एवोपरेट करते हो किसी चीज को तो आप उसको ड्राई करते हो टिल ड्राइनेस, मतलब उसको हीट करे जा रहे हो, हीट करे जा रहे हो, इतना हीट कर रहे हो कि उसका सारा पानी एवोपरेट कर देना है आपने, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, सॉल्ट बचेगा, ठीक है। ठीक है सर। और जब आप किसी क्रिस्टलाइजेशन आप करते हैं ना, क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम हीट करते हैं सैचुरेशन पॉइंट तक, हम उस पॉइंट तक हीट करते हैं जब मैक्सिमम पानी एवोपरेट हो जाए। जब मैक्सिमम पानी एवोपरेट हो जाता है तो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा विस्कस हो जाता है, ठीक है ना। जब सॉल्यूशन विस्कस हो जाता है, देयर आर सम वाटर मॉलिक्यूल्स ओवर देयर इन द सॉल्यूशन, फिर हम उसको हीटिंग पे से उतार के रख देते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं क्रिस्टलाइज होने के लिए। जब वो रूम टेम्परेचर पे आना शुरू होता है, टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, पार्टिकल्स एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वापस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो क्रिस्टल बन जाते हैं वो क्रिस्टल में हासिल कर लेते हैं, अदरवाइज जो नहीं बनते उनको अलग करते हैं, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? सैचुरेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जब आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हम रिमूव कर दें, तो जो सॉल्यूशन आपके पास हो ना, उसके अंदर आपके पास फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व करने की, यानी कि फर्दर सॉल्ट डिसॉल्व करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ओके सर, मतलब एक ऐसा पॉइंट जब सर आपका सॉल्वेंट ने मैक्सिमम सोल्यूट को डिसॉल्व कर लिया हो। बिल्कुल, you will learn this in salts formation as well. Don't worry about that. We will talk about Okay, this sir. in deep, right? Don't Okay, don't sir. worry about that. So this process is what this is actually filter or separating funnel. You can use this funnel to separate out two miscible liquids. You can say that it can be used to separate immiscible liquids. It can be used to separate immiscible liquids, right? अब बच्चों, what is immiscible liquids? Immiscible liquids क्या होते हैं आपके पास? Immiscible liquids, for example, if you have a mixture of oil and water, so can they be mixed together or not? No, sir, because oil's density is higher than water. Exactly, oil की density higher है या lower है, I don't care about that, and definitely they are insoluble in each other, right? पानी के ऊपर oil आ जाएगा या oil के ऊपर पानी आ जाएगा, whatever the scenario, they are not soluble in each other. Is that right or not? बच्चों, दोनों आपस में soluble हैं या नहीं? Yes, नहीं है ना? Yes, आपने बारिशों में देखा होगा, बारिशों के अंदर बहुत सारी जगहों पर आपको कलरफुल पानी नजर आएगा और उसके अंदर छोटे छोटे से बबल्स घूमते हुए नजर आएंगे, और वो क्या होता है आपके पास, जहां पर भी रोड पे कहीं ऑयल पड़ा हुआ होता है, किसी गाड़ी का गिर जाता है, जब उस पर बारिश का पानी आके गिरता है तो पानी और ऑयल एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, दे आर नॉट सॉल्युबल इन ईच अदर। तो क्या होते हैं, वो दोनों अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं, पानी के ऊपर ऑयल आ जाता है या ऑयल के ऊपर पानी आ जाता है, जो भी होता है सीन, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दे आर नॉट सॉल्युबल इन ईच अदर, एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं है, उन दोनों की लेयर्स अलग हो जाती हैं। जब उन दोनों की लेयर्स अलग हो जाती हैं तो वी कैन सेपरेट दीज बाय अ सेपरेटिंग फनल, ठीक है ना। हम ये वाले फनल यूज कर सकते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। हमने वो मिक्सचर यहाँ लिया अंदर इसमें फनल में, और उसको हमने ठीक से पहले हिला लिया, उसको मिक्स कर लिया, स्टर कर लिया, उसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया। जब हम थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ेंगे तो यू विल फाइंड टू डिफरेंट लेयर्स जैसे पानी है, पानी नीचे आ गया और ऑयल कहाँ आ गया आपके पास, ऊपर आ गया। नाउ यू जस्ट ओपन द टैप, आप इस टैप को ओपन करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस पानी को आप क्या करेंगे, कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही यहाँ तक पूरा पानी सेपरेट आउट हो जाएगा और जैसी ऑयल की लेयर यहाँ पर आएगी, यू जस्ट स्टॉप और यू जस्ट टर्न ऑफ द टैप, राइट बच्चों? So in this way you can separate out two immiscible liquids. Is that right or not? Yes, sir. One more question बच्चों, for example if the liquids are miscible, यानी कि एक दूसरे के अंदर क्या हो, वो soluble हो, if the liquids are soluble in each other, वो एक दूसरे के अंदर क्या हो, soluble हो, mix हो जाएं, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? फिर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं बच्चों, जल्दी से? सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम कौन सा यूज करते हैं फिर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। वेरी गुड, वी नीड टू यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देन, राइट? और मिक्सेबल में बेटे सी आता है, मैंने यहाँ सी लिखा है, एस नहीं है, ठीक है। सो
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज अलग है, जैसे अल्कोहल और वाटर है तो उसको सेपरेट करने के लिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं. You can see this is one of the method which is known as simple distillation. We already talked about this in the previous class, right? बच्चों क्या चीज है ये, इसको क्या बोलते हैं हम? It is a receiver flask, right? This is what? Receiver flask. What is this बच्चों? Sir, condenser. This is condenser. Very good. And what about this? यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? Sir, किधर? Sir, water इधर inlet. This is water inlet and this is water outlet, right? What is the purpose of condenser बच्चों? Sir, it cools the vapors. It's condense down the vapors, right? It condenses the vapors, right? And convert them into liquids, right बच्चों? Very good. What about this? What is this? Thermometer. This is thermometer. Where should be the tip of thermometer be placed? In front of the condenser. In front of the condenser opening. Very good. What is this? This is Sir, flask. Distillation flask. Distillation flask. which distillation flask. This is distillation flask. Very good. And what is this, बच्चों? This is Bunsen burner. For example, बच्चों, if in the distillation flask I am heating ethanol, for example, if in distillation flask I am heating ethanol, so what should be used as a precaution over here? Sir, either an electric heater or a water bath. Very good. Either I need to use what? I can use water bath, right? Or I can use what? I can use electric heater. This is actually what, bacho? This is actually precaution to avoid the fire over here. Electric burner, right? Why we are doing this? Because ethanol is, bacho, flammable. Ethanol is flammable. So that is why we are just avoiding this कि यहाँ पर आग ना लग जाए किसी तरह, तो इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं वाटर बाथ या इलेक्ट्रिक बर्नर. वाटर बाथ किस तरह का होगा? वाटर बाथ इट विल बी लाइक दिस कि आप यहाँ पर एक कंटेनर रखोगे, ठीक है ना? उस कंटेनर के अंदर क्या होगा बच्चों? उस कंटेनर के अंदर होगा पानी, ठीक है ना? अब इस पानी को आप हीट कर रहे हो और ये पानी जो है क्या कर रहा है? उस कंटेनर को या उस फ्लास्क को हीट अप कर रहा हो. इज दैट राइट एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. Okay, so बच्चों, why we are doing this? हम क्यों करते हैं simple distillation? We are just going to remove or we want to collect the liquid from the soluble solutions. For example, if we have a soluble solution and if we want to water separated out, so we need to do this simple distillation. For example, if you want बच्चों, आपकी दुनिया के अंदर for example पानी खत्म हो गया, ठीक है ना? पीने वाला पानी खत्म हो गया आपकी दुनिया के अंदर, तो आप क्या करोगे? You are just having a sea water, right? आप sea water लेके आओगे, ठीक है, और उस सी वाटर को लेके आने के बाद आप उसको सिंपल डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालोगे, उसको हीट करना शुरू कर दोगे. जब उसको हीट करना शुरू करोगे आप, तो देन द वेपर्स स्टार्ट एवापोरेटिंग, राइट? वेपर्स स्टार्ट एवापोरेटिंग, वेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे एवापोरेट होना. एवापोरेट होने के बाद वो कंडेंसर से पास आउट होंगे. यू आर पासिंग द कूल वाटर अराउंड द ट्यूब ऑफ कंडेंसर, सो इट विल कूल डाउन द वेपर्स एंड कंडेंस देम into the liquid form, and they will be collected in the beaker, and then you can have that water because it will be pure water, right बच्चों, or not? Is that right or not? Yes, sir. Okay, then this is what, this is the same thing. If you focus over here, this is the same thing, simple distillation and fractional distillation. The only difference is this. The only difference is this, which is actually fractionating column, which is actually fractionating column. Why we use fractionating column, bacho? Why we use So, sir, fractionating that column? so when we are separating sir two liquids which have a near boiling point to each other, so sir, fractionation column will differentiate between the two. Very good. It separates the vapors. It separates the vapors, right? It separates the vapor. For example, if you are heating two miscible liquids mixture, so definitely they can have a boiling point near to each other. When the vapors are going to be evaporated, so they are actually separating the vapors of two liquids, separating, right? This is actually separation of two different vapors, right? So fractional column is used to separate the vapors, or so you can say that it just evaporate, or it just pass the vapors that are completely gaseous, right?
And one more thing, bacho, if you remember, over here, one type of condenser is also there in some questions. For example, this is a flask, right? And in this flask, you will find a Reflex condenser. condenser. Yes, you will find condenser like this over here in that container, bacho. So this is which type of condenser, bacho? This is actually reflux condenser. This is what? This is reflux condenser. So water inlet and water outlet. This is known as what? A reflux condenser. In many of the question, you will find a condenser placed like this, placed vertically on the flask. So this is actually reflux condenser. Why we use this? We use this to turn the vapors into liquid form and send back to the flask. We want कि जो liquid है वो वापस flask में जाए, complete reaction करे, ठीक है ना? So it also what? It also condenses vapors into liquid, and send them back to the flask and send them back to the flask. Is that right, bacho? Any problem, any question that you want to ask? No, sir. Okay, so we can move down, right? This is actually identification of cation and anions. We need to do this in the next class, inshallah. But right now we are talking about some past papers questions, right? So let's see, are you able to solve past papers questions or not? Right, we already did these some past paper questions in the previous topics as well. Now we are going to have something like yes, question number 10. Yes, but so can you please solve this question number 10? Which statement about methods of purification and analysis is correct? A liquid that boils over a range of temperature may still be 100% pure. Is that right or not, Bacho? No, sir. Yeah, I think. It is completely wrong, because we know that if the substance or if a liquid is highly pure, so it's definitely boil at a fixed temperature, right? It is not boiling at a range of temperature. No, not possible, right, Bacho? The first is completely wrong. Then an Yeah. insoluble substance may be separated from water by crystallization. Is that right? Yes, sir. Crystallization, they are saying insoluble substance. I think it's no. I think it's not. Insoluble substance sir. can be separated by filtration, right? Then the C part, they are saying chromatography may only be used to separate colored substances. Is that right? We use chromatography for color substances only, or why we are No, using sir. locating agent? Yes. So It's the not. fourth one is liquid air can be fractionally distilled, giving oxygen as one of the products. Is that Yeah, right it's or the- not? This is the right answer, because air is having oxygen and nitrogen in it, right? So you can condense or you can liquefy the air into the liquid form, then you can fractionally distillate it. So one of the product will be oxygen. Is that right, but or not? I think D is right. Okay, so this is the right answer. Then this is actually the rate of reaction. So I'm not talking about this right now. And this one. Question number 12, bacho. Which methods of separation required a change from of state from liquid to gas? Yes. Which of these having liquid to gaseous change in state? Chromatography is going Yes, to sir. convert the no. Crystallization, Crystallization, yes. And crystallization, distillation, and distillation. Yeah. yes. Two and These three. two Two are and three. only, yes. These two are only going to convert the liquids into vapors, and then they are going to be having like vapors or whatever solid you are going to have. So these two processes are actually converting liquid into gaseous state. Very good. Then in this one, they are asking for titration. So I'm not talking about this one right now. Which process involved in all of the three? Yes, we can see this. Which process is involved in all of the following? Obtaining copper sulfate crystals from aqueous copper sulfate, right? So it is actually crystallization, right?
Then obtaining ethanol from fermentation of glucose. I think Obtaining A, sir. ethanol. This is a different thing. I think it will confuse you because it is a part of organic chemistry. Then obtaining nitrogen from the liquid air. It is also what? It is also what? Distillation. So I think Distillation. you can do distillation for this right now. It is actually problematic for you because part 2 is not, you are not familiar with this now. But you need to understand this. For example, बच्चों, if you have copper sulfate, right? और आपको copper sulfate के crystals चाहिए solution से. So you can even get the crystals of copper sulfate by evaporating the water and collect the water in the distillate, or you can have the crystals in the distillation flask. It will be remain over there, right? Then second one is ethanol. Actually, when you form ethanol by fermentation, fermentation forms a mixture of ethanol with the yeast and the different things over there. So it is actually a impure form of ethanol. So if you want pure ethanol from the mixture, so for that you need to do distillation. And also if you want nitrogen from air, so you can do distillation. For distillation, fractional distillation can be used to have a pure substance from mixture of the miscible liquids, right? Now, bacho, question number 15. The diagram shows 3 stages, 1, 2, and 3 used in the preparation of salt. This is the question of the formation of salt, right? But I think we can solve this. For example, which rock correctly shows the solubilities of both the reactants and the salt from in this preparation, right? So you can see this. They are adding a spatula of one of the reactant, which is solid, right? And this is a part of salt formation, so it will be difficult for you. Actually, when we are using the mixing method for the formation of salt, so we just use insoluble one in excess, and it is actually insoluble. We take this in excess, so it is actually insoluble, and it is the formation of soluble salt as actually. So we are just skipping this because this is not the thing right now. You are not aware about the salt formation, so it will be difficult for you. So I am leaving that question. It is also the part of rate of reaction. So I am leaving this. You can solve this in your papers because we don't use a scale on the screen. It will be different answer over there on the screen. And this is titration. This is chromatography. We already did. Yes. सर हम कोई टॉपिक नहीं कर सकते क्या करें बेटे? सर कोई टॉपिक ना कर लेंगे टाइम है Actually we completed this ना, कल हमारा इसका टेस्ट है, if you remember, ठीक है ना? तो अभी मुझे कराना है आपको कैटाइंस और एनाइंस, उसके बगैर मैं इस Sir, चैप्टर को छोड़ नहीं सकता. ओके सर कैटाइंस और एनाइंस जब आप कर लेंगे ना, तो फिर आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कवर हो जाएगा एटीपी का, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाई आई वांट कि हम वो कर लें. तो उसको करने के लिए इस चैप्टर के अंदर रहना जरूरी है. वैसे तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको अभी पढ़कर अभी याद कर लें, ताकि आप उसको बार बार रिपीट करें तो वो आपके लिए आसानी हो जाए. पेपर 4 में तो वैसे वो डेटा बुकलेट दे रहे हैं आपको, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 में अभी भी वो श्योर नहीं है कि वो क्वेश्चन देंगे या नहीं देंगे. तो दैट इज व्हाई आपको मजबूरी उसको अभी फिलहाल याद ही करना पड़ेगा. जी कोई कुछ कह रहा था? सर कल कोई टेस्ट है? जी बेटा, इस चैप्टर का टेस्ट है जिसमें क्रोमेटोग्राफी, सर- डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन वगैरह आएंगी. सर मैं तो आज ही ज्वाइन हुआ हूँ मैं तो. कोई मसला नहीं है. अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, और अगर आपको नहीं देना टेस्ट तो दैट्स ओके, नो इशू. सर अभी तो टाइम चाहिए होगा मुझे अगर करने के लिए, टेस्ट देने के लिए. तो कोई मसला नहीं है. आप अगर आप देना चाहें वैसे ही आप दे दीजिएगा. एक आध रिकॉर्डिंग देखकर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं. आई डोंट माइंड इफ यू गॉट लेस नंबर्स इन द टेस्ट, दैट्स फाइन, नो इशू. और अगर आप नहीं देना चाह रहे तो कोई मसला नहीं, आप वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास ले लीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट दे दीजिएगा आप, ठीक है? हाँ नेक्स्ट Now, का दे which- देता हूँ. ठीक है, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं. अब देखिए बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 26 इट इज अगेन डिफिकल्ट वन फॉर यू, बिकॉज इसके अंदर भी आपको सॉल्युबिलिटीज का पता होना जरूरी है. अगर आप पता ही नहीं है कौन सा सॉल्युबल सब्सटेंस और कौन सा इनसॉल्युबल है, तो आप ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते हो. So leave this. Just talk about this one. 29. Yes, bacho. Can you solve this 29? They are saying a mixture of sand and sodium chloride can be separated in 3 steps. Step number 1 is add the water to the mixture. Then the diagram shows step 2 and step 3.
where is a pure sodium chloride collected? जी बच्चों, कहाँ पर collect होगा? बी में आई थिंक, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन की वजह से है। कहाँ पर होगा? बी में? हाँ आई थिंक मिस ये नहीं बच्चे यार, नहीं 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 नहीं, what they are saying where is pure sodium chloride? They are asking for pure sodium chloride. अच्छा बताएं, सोडियम क्लोराइड पानी में soluble होता है या नहीं? सर soluble है। सॉल्युबल है। तो जब आप पानी के अंदर मट्टी को और नमक को मिलाएंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, नमक तो सॉल्युबल हो जाएगा, मट्टी डिसॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर सर ये तो फिल्ट्रेशन रेसिड्यू से जो सर ये तो हीट वाले में नहीं होगा? डी। डी होगा इसका आंसर। यस, इसका आंसर डी होगा। शाबाश। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, जब आप इसको फिल्ट्रेशन करेंगे तो सैंड विल बी सेपरेटेड इन द फिल्टर फाइनल व्हिच इज बी राइट नाउ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सैंड ओवर हियर। देन वी हैव सी व्हिच इज अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl. व्हेन वी हीट द NaCl सॉल्यूशन वी विल हैव salt remain in the dish and the all water will be evaporated. So D, which is remain in the dish, is actually salt. Is that right, bachcho, or not? Yes sir। Okay. Then over here we have few more questions. Right. We already did this chromatography one. This is actually soluble salts. Leave this. We already did this. Chromatography. We already done this. Yes, bacho. Can you solve MCQ number 43? Sir। Yes. Just try to solve this. MCQ number 43.